हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि कार्बन के जो है एटॉमिक नंबर 6 है और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो कार्बन ऐसी पोजीशन में है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो कार्बन किस तरह की एटम्स के साथ कंबाइन करेगा? सेम काइंड के एटम्स होंगे या डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हम वन बाय वन इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कार्बन के जो है वैलेंस शेल में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर arranged in such a manner that they will form the tetrahedron structure. Tetra means it has a 4 electron and which are situated at the 4 corner of tetrahedron. So it is has the tetrahedron nature. So it can combine either with the same element. Let us take the example कि अगर कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ अटैच करेगा। अब इस कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरा कार्बन है उसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपस में ये जो है शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग से हमारे पास जो है बॉन्डिंग बनेगी। इस तरह की बॉन्डिंग जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है उसको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन एलिमेंट सेम काइंड के एलिमेंट से भी कंबाइन कर सकता है। और दूसरा हम ले लें, कोई और एग्जांपल ले लें। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आल्सो हैज़ द 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। टू कंप्लीट द डुप्लेट, हाइड्रोजन विल शेयर द इलेक्ट्रॉन with the carbon as well as carbon will share the electron of the hydrogen. Similarly, other hydrogen will be there and it will share with it and the to get its duplet complete. Similarly, carbon will share the electron with the other hydrogen and to complete its octet. So in this way we can say that hydrogen and carbon both are sharing the electrons to complete their octet. So such type of bonding between the same kind of elements or different elements to form by the sharing of electron is called covalent bonding. तो कोवलेंट बॉन्डिंग के हम और एग्जांपल लेंगे कि डिफरेंट काइंड्स की कैसी कैसी होती हैं। कार्बन जो है, कार्बन ने क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग भी हो सकती है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग भी पॉसिबल हो सकती है। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बाकी जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स के साथ जो है कंबाइन कर सकता है ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। तो वन बाय वन हम डिटेल में इसके बारे में लेटर ऑन पढ़ेंगे कि किस तरह की जो है बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। अब हम ये देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में इन तीनों की में तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ये मोर स्ट्रॉन्गर होता है दैन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। तो डिटेल में हम इनके बारे में अब एग्जांपल्स लेते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास जो है कार्बन की जो है इस प्रॉपर्टी को कि कार्बन जो है डिफरेंट कार्बन के साथ मिलकर जो है एक लॉन्ग चेन भी बना सकता है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग with other carbon atoms.
due to which it forms a large number of compounds, and we study the organic family due to the presence of this property in the carbon. Now let us see the few more examples related to the bonding present in the carbon by taking the other examples. Let us take the example of hydrogen. Now hydrogen, as you know, in the valence shell, hydrogen has only one electron, and to complete its duplet it combine with the other hydrogen atom and share the pair of electrons. Both the electrons, they are shared by equally by both the hydrogen atom, and the electron pair will lie exactly at the center, and to complete its octet we will get the hydrogen molecule. So it is a single bonding between them is there. Let us take the double bond example. In the double bond, we can take the example of oxygen molecule. As you know, in the valence shell of oxygen, there are how many electrons are there? Atomic number of oxygen is 8, and it has in the valence shell 6 electrons. So let us show the 6 electrons by these cross. These 6 electrons are present in the oxygen. Now to complete its octet, it required 2 electrons. So it combined with the other oxygen atom, which also has the same valence electrons, and now in this case the electron pair is shared between the two oxygen atoms are 2 pair of electrons. These are the electrons which are shared by the both the oxygen atoms, and such type of bonding where the 2 pair of electrons, these 2 pair of electrons which are shared, that is called the double bonding. So this is the structure of oxygen molecule, in where the 2 electron pair, these are shared, while you can see in this structure the few electrons, this one, they are not participating in any bonding. So such type of electrons, they are called the lone pair of electrons, which are not taking part in chemical bonding. So where different kind of electrons are also present, and the electrons which are participating in the reaction, that are called bond pair of electrons. इज इट क्लियर कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर, और ये दूसरे किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर भी कंपाउंड बना सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो. Now let us take the one example of the triple bond, like the nitrogen molecule.